6 September 2018. When the Supreme Court of India abolished Section 377, they realized that they are not meant to continue to stay in hiding. But the struggle has just begun. It was by, I feel sorry to say this, but it was by my mother who told me that I gave birth to a son, not a hijra. Till 2017 or 18, I'm not sure with the year, 377 was read down in September, right? In August, there came a judgment called the Decriminalization of Begging Judgment by Delhi High Court. We don't tend to think about that the moment I am thrown out of my family, sex work, begging, and totally badai. That is the only work that I am left with. Trust me, I dress like this because I have to create my space. मेरे लिए कोई space किसी ने create नहीं किया है, मैंने ही create किया है. अब मुझे ही करना है. सबको मुझे एक एक दिन सोचना पड़ता है कि आज मैं जिंदा रहूँगी. मैं जिस प्यार को जैसे प्यार को ढूंढती है वैसा मुझे नहीं मिला. मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे पार्टनर के अंदर इतना गट्स हो कि वो सोसाइटी के सामने मुझे एक्सेप्ट कर सके. सोसाइटी के सामने तो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली को बताने में वो हिचकिचाहट के अंदर है. Do we really know the meaning of love? What if we are wrong? Is fate something which we can decide? Status complicated. The Dramatic Society of the SRCC group is getting ready to perform their street play on the last day of the Queer Fest in Ambedkar University. The university seems very liberal and open-minded to the ideas of youth. The stage has been set and the audiences are early for the play to start. Soon, their wait comes to an end. Hi everyone. Hi. All right, so we know what we are here for, do we? Do we know what we are here for? All right, we are here for the closing night and we are going to begin with the street play from SRCC College. So, can we have a big round of applause for them, please? All right, all yours. I'm Scarlett and I'm 26 years old. That's my drag name and I'm a drag queen. Just to be clear, drag is not about gender identity, it's a performing arts. And I identify myself as homosexual depending on the sexual organs that I'm born with. And my gender identity is androgynous. I do not identify as man, woman, or trans person. So there are quite a lot of gender identities that people really need to understand. And growing up as a person with a complete no knowledge about what gender identities or what sexual orientation are supposed to be, it was all the same. A man, a woman, or else you're a hijra. And it took me at least 18 years to understand that homosexuality is not being hijra.
And another 3-4 years probably, which took me to understand that okay, there are gender identities which are beyond man, woman, and third gender, or hijras to be precise. And the more I started accepting myself, I realized it started becoming more and more difficult for others to accept me. I mean, as long as I was in masculine attire, as long as I was wearing boys' clothes and keeping beard, mustache, and doing things what boys are supposed to do, everyone was comfortable about it. But the moment I started getting comfortable in my own skin, people started retaliating. ये निकला तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? सब लोगों ने सुन लिया होगा, आपने बहुत जोर से बोल दिया है। तो जब सेक्शन 377 रिपील हुआ था तो इन्हीं सब ने इंस्टा स्टोरी डाली थी, हैशटैग नो कैप्शन को हैशटैग लव विंस बनने में टाइम कितना लगा था। और दीदी आप तो वाह भी कर रहे थे, तो आप तो बात ही मत करो है। तो दिक्कत ना समाज के इसी हिपोक्रेट एटीट्यूड में क्यों है? दिक्कत दरअसल ये है कि जब मैं आज सुबह 8:30 बजे मेट्रो में बैठा तो इन दीदी की नजर पड़ी मेरे पैरों पर और मेरे पैर अपने आप इधर से इधर आ गए, बिकॉज आई एम सपोज टू बी अ मैन। दिक्कत ये है कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड या जोई और चैंडलर, सॉरी वापस, कभी हग नहीं करते, बिकॉज वी आर ब्रोस। जनाब, आपने और मैंने मिलके ना बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हैं और हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पसंद है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स लोग नहीं। तो हम करते क्या, जबरदस्ती निकल पड़ते अयान को इन्हीं डब्बों में फिट करने अपनी सहूलियत अनुसार। आप बताइए कितने का बेचा है? रीमा, तुझे अयान पसंद है ना? हाँ, अयान ना, अयान। रीमा, ये फॉर्म भरना था। क्या तुम? आप सब लाइन में आ जाइए। अरे भाई, फॉर्म तो पूरा भर लेते। भैया, मम्मी पापा का अप्रूवल तो है ही नहीं। अभी तक पूरा नहीं भरा। तो दोस्तों का रेफरेंस भूल गए। रेफरल है, अप्रूवल है, सब तो है, और क्या लोगे? तेरा खुद का सिग्नेचर का है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं कर दूं क्या? Hello, my name is Ray and my pronouns are she and her. I identify as a trans woman, or if you don't understand the term trans woman, it means a transgender woman. My operative status is pre-operative. I have not gone through the surgery. The LGBTQIA plus community only differs with straight community in terms of their sexual orientation and their gender identity, being unable to understand. Facing a lot of abuse, advice and tricks to cure themselves pushes them towards immense anxiety and depression. But the most painful is unacceptance from their own family. I still remember this one incident very clearly where I came to blows with a person almost, and they started talking on my face that, bitch, I don't know whether you're bisexual or not, you need to actually go see a and correct your sexuality and go to a mental health professional. Although I'm sugarcoating the words were worse, and it was in front of the entire class. I can, if I have to talk about the worst comment, I'll tell you this one particular incident which I can categorize as a worst comment. I'll call them out openly. This was in Amity, Noida, and back then I had a Samsung Galaxy Tab 3, and that was like pretty much the first smartphone. I used to have the small Nokia phones, so I did not have a smartphone. I used to have a QWERTY BlackBerry phone uske pehle. So I did not know how to use it, and it was pretty much slow. Those days internet was very slow. It was in 2013. I just entered Amity, bachelor's in Pol Science. One of my friends borrowed my tab, and he said, I want to make a call and I want to see something on the internet. I was like, okay, theek hai. This was between classes. I went to the washroom and I came out and I could see everybody shocked. I didn't know what was going on.
I was like, ठीक है, okay, कुछ चल रहा होगा. I took the tab back. This was around like 15-20 minutes हो गया था. And after a week, I came to know through a third person outside the class that since Amity being Amity, you have projector. They connected my tab to the projector. They opened my internet history. I had not deleted my internet history. I did not know how to delete my internet history. They opened my internet history. They clicked on the porn sites and they knew what models I had seen. And the teacher walked in and the teacher did not object, by the way. And the entire class for 3 years and even now knows what models I watched back then, what did I search on Google, and how to fool me out. And that did tend to affect me, because what happened was after a year they cornered me. One of the persons, being my close friend, cornered me and started invasive questions. What do you like? For example, I was walking after Amity Fest. They just called me, grabbed me and made me see a classmate, a girl, and check her out from top to bottom. It's invasive for her too. And asked me, what did you notice first? They wanted the answer as boobs. They wanted the answer as probably vagina. I didn't say all those stuff. I said I saw her eyes, because obviously I was trying to pretend to be straight by then so that I get out of all this mess. And that obviously didn't work, me pretending to be straight and having like an imaginary girlfriend. And because they wanted to call me out that I don't like girls. And probably that girl was also into it, so she was very happy. And they cornered me by asking, okay, what, I'll mention the porn star, Harry Lewis. Oh, do you like Harry Lewis? Do you watch bisexual porn? And things like girls like guys, girls like dicks, so they would love to watch gay porn. Boys like girls and boobs and vagina, so they tend to watch lesbian porn and fantasize about it. So are you a girl or a boy? I lost friends who simply denied me to be their friends anymore because I was gay. They thought that I would turn them gay. I was like, no, that doesn't work that way. I mean, no one turned me gay. And then when I started realizing about my gender identity, the more I explored about my gender identity, the more I started playing with makeup, the more I started playing with dresses. People started questioning me that, are you Hijra? I'm like, no, I'm not Hijra. I mean, I don't want to go to the Hijra community, follow the Gharana system and get into some Guru Chela Pratha. It's a whole lot of tradition that has been followed for centuries and centuries. People think that, you know, being Hijra is derogatory, which is not, to be very honest. And if you look at history, Hijras are actually more respected as compared to what we do now. Not just that, people started questioning me that, are you a woman? And I was like, is that something to be disrespectful? I mean, being woman is a respectful thing. If I am a woman, if you think that I'm a woman, what is so bad about it? I mean, how are you looking at me so down, like I am wrong? I mean, being woman is wrong. I mean, if you look at today's world, if a girl takes care of her family, people will be like, ye mera beta hai, this is my son. I mean, still, son are given higher precedence as compared to women. And I do not understand, or I do not appreciate the fact that men are always considered higher or above anyone else, which is not really the case. I mean, everyone is equal. There are Hijras who have been tax collectors. There are Hijras who have been warriors in the past. There are women who have been warriors in the past, and it's not just men who have always dominated. So that's the whole issue that I always face regarding the gender identity. And not just that, I mean, people have harassed sexually. I have been harassed, molested by men, by women, and I don't know how to explain this. People think that, okay, only men harass or men are the molesters, but no, women also do that. So that's why I keep on telling people that gender are equal.
If there are pervert men, there are pervert women. If there are pervert gays, then there are pervert straight men as well. It does not mean that your sexual identity or your gender identity determine whether you are a good person or not. I think everyone needs to understand a person is good or bad regardless of their gender, regardless of their sexual identity, and regardless of whatever they feel like. Does your parents support you or not? Well, no, my parents are still not accepting what I am. I mean, recently I had a conversation with my father, and he asked me that he's ready to support me once again, financially or educationally or in any way that I want, but the only condition was that I stop being myself and go back to him on his condition. So that's, yeah, I don't think they're supporting it. Honestly, the worst experience what I had was the first time I was sexually molested in public and no one came to my rescue. That gave me anxiety and panic attacks. After that, I had been suffering through that mental disorder. But apart from that, I think the worst comment that I ever faced, it was by, I feel sorry to say this, but it was by my mother, who told me that I gave birth to a son, not a hijra. That was a turning point for me, because after that I realized whatever she says, even if she calls me hijra, I'm still a human being. And probably that was one reason why I started accepting people, whoever they are, or whatever color, race, gender, sexuality, whatever they are. I started accepting more and more. So I think it was the worst comment, but it made me a better person. I'm going to ask you one question, and you all have to answer that. Section 377 of the Indian Penal Code is a section of the Indian Penal Code introduced in 1864 during the British rule of India. Modelled on the Bagri Act of 1533, it makes sexual activities against the order of nature illegal. On 6 September 2018, the Supreme Court of India ruled that the application of Section 377 to consensual homosexual sex between adults was unconstitutional, irrational, indefensible, and manifestly arbitrary. अरे मैडम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? अरे भाई साहब, सेक्शन 377 रिपील हो गया। अच्छा, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारे राइट्स मिल गए। लेकिन इतनी कोर्ट कचहरी के बाद अब होमोसेक्सुअल में तो सब कर ही सकते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम अपने इंडिया का लॉ ही चेंज कर देते हैं। सिंपल। लो हमारे हाथ में छोड़ना है। अरे लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए तो आवाज उठा ही सकते हैं लोग। See, 377 does tend to, okay, reading down of 377 does tend to have a positive effect, in the sense that newspapers, Uber, I'll tell openly those names, Uber, Ola, all those capitalistic apps tend to suddenly have a rainbow on them. 377 read on होने के बाद suddenly they have rainbows. उसके पहले उनके पास guts नहीं था, by the way. तो सारे rainbows डालेंगे and they will be like, we accept you, love is love. Even here in the play, love is love. I'm like, 377 is about sex. It's not about love. 377 literally reads as unnatural, and it's about non-peno-vaginal penetrative sex. Anything that is non-peno-vaginal, any sex or any behavior is criminalized. So it's about sex. People tend to like impute love and other things. I'm like, ठीक है, वो तो आ ही नहीं रहा है. It's criminalized, of course, and it got read down. 377 did have, people tend to forget this part about 377, a lot of history about 377. Like the first person who was arrested when the 377 was brought was a hijra person, not a gay person. Back then, the word gay was not even in the vocabulary the way it is now. Earlier, gay used to mean happiness. You're happy and you're gay, clap your hands. There used to be actually a poem. Now you can't teach that poem to young kids. Parents will have a huge problem with it, of course.
So 377 first arrest was of Hijra. Initial fight against 377 was Hijra folks, trans folks, sex workers, and for workers who worked against HIV, spreading of HIV. It was not by LGBTQ community or gay community. But we tend to privilege that, right? Now if you pick up 377, all the readings, they're all cis gay men who dominate the discourse, not us. But legislations like the Criminal Tribes Act, people don't remember that there used to be legislations before independence and even after independence, where if I have to, for example, if I am at that time, if I have to move from say Delhi to Noida, district to district, I'll have to go to the district magistrate, and the district magistrate will permit me, otherwise I'll be arrested. Till 2017 or 18, I'm not sure with the year, 377 was read down in September, right? In August there came a judgment called the Decriminalization of Begging Judgment by Delhi High Court. We don't tend to think about that the moment I am thrown out of my family, sex work, begging and tolli bhadai, that is the only work that I am left with, where I have people from my community there. And that was also criminalized till very recently. People don't tend to talk about that. Everything is made about 377. It's made so big. Of course it does affect the gay community. A lot of attacks do happen. I'm not denying that fact. But everything is reduced to 377. That's what I'm all inferring to. Nalsa judgment, people didn't even care. Nalsa judgment aaya hai karke. And there are loopholes in the Nalsa judgment. No one cared. 377 को इतना बड़ा बना दिया, everybody started just dancing. I was like, ठीक है, okay. देखिए, मेरा मानना ये है कि 377 पर्सनली मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे मालूम नहीं था ये एक्ट के बारे में. हाँ, हालांकि कुछ ना कुछ कानून तो मेरे साथ कुछ करता है. अगर मैं आ जाती हूँ तो कानून मेरे साथ कुछ करता है, लेकिन चूँकि मैंने उस दौरान मुझे अपने आप को बचा के रखना था. देखिए, आप कानून कितना भी बदल लोगे ना, समाज तो नहीं बदला है ना. समाज तो वहीं का वहीं है. आप कानून में 377 डिक्रिमिनलाइज कर दो, सब कुछ कर दो, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, अच्छी बात, लेकिन समाज तो वहीं का वहीं है. आज भी मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ. इवन प्राइड मार्चेस में आप देखो, क्वेयर प्राइड मार्चेस में पैन सेक्सुअलिटी के झंडे तक नहीं मिलेंगे आपको, लोग तक नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि इवन उनको गे लेस्बियंस जो मोनोसेक्सुअल है ना, उनको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं. चीटर बोलते हैं हमें बोलते हैं तुम एक की नहीं हो सकी तो किसकी होगी. मेरा नाम रानी है और मैं अपने आप को एक पैनसेक्सुअल के जैसे आइडेंटिफाई करती हूँ, और मैं एक फ्लूइड इंसान हूँ. मैं एक फ़ैट पर्सन भी हूँ, जो मेरा बॉडी से दिख रहा है ऑब्वियसली. दिक्कत मेरे साथ भी है, सोसाइटी के साथ भी है. मेरे साथ ये दिक्कत है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी मैं क्या हूँ. जब तक आपको जानकारी नहीं रहता, आप तो भटकते रहते हो ना अपनी पहचान के लिए. सोसाइटी ने भी और मुझे घुमाया कि तुम सो कॉल्ड एबनॉर्मल हो. तुम अगर मैं एक औरत हो गए, उनको लग रहा था मैं औरत हूँ, तो उनको लग रहा था कि औरत होगी ये कैसे मर्दों से प्यार नहीं कर सकती, तो करना तो पड़ेगा ही. वो तो टैग लगा देते हैं कि आप टैग तो लग गया था तभी जब मैं पैदा हुई थी कि इसका तो फ्यूचर ही है किसी की बीवी बनना, किसी के माँ बनना, ये करना. जबकि मैंने अपना डिसाइड किया था कि नहीं, ये कन्वेंशनल नॉर्म तोड़ना ही है. हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं बहुत एबनॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मलसी फॉलो ही नहीं करती. लेकिन सबसे पहला बात ये हुआ है कि चूँकि मैं बोलती हूँ मैं फ़ैट हूँ, ना तो मुझे क्वेयर सर्कल में एक्सेप्ट करते हैं और ना तो ये स्ट्रेट वाले लोग जो हेट्रोसेक्सुअल है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप चाहिए. पतली हो, गोरी हो, अच्छे नैन नक्श हो. लाइक मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. पूरा भर के देखिए, सोसाइटी में आप रह रहे हो तो वही चीज़ कॉपी करो ना. हर कोई हर चीज़ एक दूसरे से कॉपी करता है. तो ब्यूटी नॉर्म्स जो है
सुंदर दिखना, जैसे बोलते हैं ना हम कितना सुंदर दिखें। मुझे तो बोला गया अरे तू कितनी काली है, तू ब्लीचिंग क्रीम लगा ले, तू गोरी हो जाएगी 7 दिन में, जो टिपिकल एडवर्टीजमेंट वाले बोलते हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा एडवाइस मिली मेरे वेट लूज़ करने को। तो मैंने बोला कि आप बोलते हो कि आप क्लोजेट से निकलते हो, मेरे लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मैं तो ऑलरेडी निकली हुई हूँ। मेरा तो बॉडी ही विजिबल है बहुत ज़्यादा, मैं तो हूँ ही फैट। लेकिन उस बार में लोग मेरे से पब्लिक में सेक्स नहीं करते थे, पब्लिक में कभी हाथ पकड़ के नहीं, कोई भी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी जेंडर आइडेंटिटी का, उनको मेरे साथ हाथ पकड़ के चलने में बाद में शर्म आती थी। एक तो हूँ मोटी और ऊपर से क्वेयर भी हूँ, पैनसेक्सुअल भी हूँ। एक तो उनको पैनसेक्सुअल वर्ड से भी पता नहीं चलता था, समझ ही नहीं आता था। अब धीरे धीरे लोगों को पता भी चला, जो जिन लोगों को पता चला उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत हिचकिचाहट से मुझे एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके दिलों में यही था कि मैं ना पर्वर्सिटी, मतलब बोलते हैं कि बहुत अजीब टाइप की, अजीब वर्ड लगा दिया मेरे ऊपर। ये जो गे लेस्बियन, इनके पास ना प्रिविलेजेस हैं, एटलीस्ट इनके पास एक पार्टनर रहते हैं, वो आइडेंटिफाइबल है, चलो सेटल हो गए। हमारा क्या है कि हम, मेरे को एक से संतुष्टि नहीं मिलती, मैं साफ बोलूँ, चाहे किसी को भद्दा लगे, मुझे नहीं संतुष्टि मिलती है। मैं अभी यहाँ कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने 36 टाइम्स सेक्स किए, बट एंटायर टाइम मोस्ट ऑफ देम वे somewhere men, somewhere women. But the thing is that I never got that kind of satisfaction because I was struggling with myself, with my identity, कि मैं हूँ कौन। जब तक आप खुद से लड़ते रहते हो ना, आपके मन में ये दिमाग में चलते रहता है कि मैं हूँ कौन, तो मैं सही बात बोलूँ, सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेक्स केवल ये नहीं होता है पीनिस इन वजाइना हो गया। Despite being discriminated and unrecognized on the basis of their sexual orientation, the community is still fighting for themselves to pursue a better future. मेरा नाम किरण है और मैं एनजीओ में जॉब करती हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी एज ए ट्रांसजेंडर बताती हूँ और मैं खुद एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ और एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। और मुझे बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ाई के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक रूम पे आइसोलेट होकर रहती थी बचपन से ज़्यादा, तो मैं हमेशा टीवी देखती रहती थी। तो मुझे पढ़ाई के साथ मुझे डांस, एक्टिंग और इन सब का भी शौक़ है और मैंने 3-4 रैम्प शो करी हूँ और मैं कुछ एड शूट भी करी हूँ और मैंने छोटे से एक रोल भी किया है मूवी में श्रीदेवी के साथ। मुझे डांस का बहुत शौक़ है, तो मैं सेमी क्लासिकल भी करती हूँ। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ अपनी आइडेंटिटी के? मैं अंडमान से हूँ, अंडमान पोर्टब्लेयर, क्योंकि जब भी मैं अंडमान की बात करती हूँ, जब मैं नई दिल्ली आई थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से हो। जब भी मैं उनको बताती थी तो वो कहते थे कि मैं जब उनको बताती थी कि मैं अंडमान से हूँ, पोर्टब्लेयर से, तो वो लोग बोलते थे कि इंडिया से बाहर है क्या, आप इंडिया से बाहर से आई हो। तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई और मेरी जो परवरिश है वो सारी अंडमान पे ही हुई है। और मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मैं एडोलेसेंट एज में थी। वैसे तो मुझे बचपन से ही जो मेरे इंटरेस्ट है, जो मेरी फीलिंग है, वो लड़कियों की तरह थी और मेरे जो हाव भाव थे और जो मेरी फीलिंग थी, मेरे लाइक डिसलाइक, तब सब लड़कियों की तरह थी। बट मुझे मैंने कभी ये नहीं रियलाइज़ किया कि मैं बायोलॉजिकली एक लड़का पैदा हुई हूँ, बट मैं हमेशा अपने आप को लड़की सोचती थी। बट मुझे रियलाइज़ तब हुआ क्लियरली जब मैं एडोलेसेंट एज में थी और जब मुझे पता चला कि मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। क्योंकि स्कूल टाइम में होता है कि हम लोग काफ़ी अफेयर चलते हैं लड़की लड़का का, लड़का लड़की का, तो मैं अपने आप को फील कर रही थी कि मैं लड़का की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। और मुझे फिर मैं इस बात को किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही थी और मुझे बहुत इमोशनली प्यार वाली फीलिंग होती थी मैं किसी एक लड़का को देखती थी। तो बट मैं ये किसी को बता नहीं पाती थी कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है और मैं किसी को शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को शेयर करूँगी तो लोग मजाक बनाएंगे। आप कभी रिलेशनशिप में रहे हैं? हाँ, मैं रिलेशनशिप
मेरी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो 2-3 बार चली है और स्टिल मैं रिलेशनशिप में हूँ। बट जब भी मैं रिलेशनशिप में रही हूँ मुझे प्यार तो बहुत मिला है और लेकिन प्यार के साथ साथ मैं कई बार अकेलापन भी बहुत फील करी हूँ और फिर मुझे लगता था कि शायद मैं जैसे प्यार को ढूंढती है वैसा मुझे नहीं मिला। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा पार्टनर के अंदर इतना गट्स हो कि वो सोसाइटी के सामने मुझे एक्सेप्ट कर सके। सोसाइटी के सामने तो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं बट कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली को बताने में वो हिचकिचाहट उनके अंदर रहती है हमेशा। आपके अकॉर्डिंग लव क्या होता है? व्हाट इज लव? मैं एकेडमिक सेंस में बताऊँ कि मेरे खुद के हाँ मेरे खुद के हिसाब से प्यार जैसा शब्द जो है बहुत मतलब वो उतना उलझ चुका है ना कि मेरे लिए प्यार जैसा शब्द का भी अभी मायने नहीं रहा है, क्योंकि एक मेरे साथ प्यार के नाम पे हरासमेंट वगैरह ये हुआ है, क्योंकि आप एक मैं एक वल्नरेबल पोजीशन में हूँ। लोग मेरे को बोलते चीटर हो, मेरे लोग ये बोलते हैं, लेकिन कभी मुझे एक रियल लव वाला फीलिंग जो होता है मैं अभी भी एस्पायर करती हूँ। मुझे अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में है कि मुझे मिलेंगे प्यार, मैं मिलेंगे बोलूँगी, मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेंगे। क्योंकि मेरे लिए लव का कंसेप्ट ये है, यू कांट गेट लव फ्रॉम ओनली वन सोर्स। एंड फॉर मी लव इज़ नॉट ओनली दैट कपड़े खोल लिए, सेक्स कर लिया, हो गया, कमरा बंद हो गया, फिर हो गया, वो नहीं है। वो मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला है कि कम्युनिटी एक लव है। कोई मेरे लिए खाना बना ले, कोई मेरे बातों को सुन ले, वो प्यार है। मेरे लिए इंटीमेसी जो है, मेरे लिए प्यार वही है। Tough to answer, but love is about being vulnerable. Love is about, sharing your loneliness maybe. We tend to privilege love the moment we speak of love and lovers. I am assuming this is about love that is not non-familial. फैमिली में जो मदर से मिल रहा है या पेरेंट्स से मिल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. द मोमेंट वी हैव पार्टनर्स एंड लवर्स वी टेंड टू प्रिविलेज देम अबाउट एवरीथिंग एल्स इन आवर माइंड्स. फ्रेंडशिप वाला लव नीचे, पीपल इन योर कम्यून फ्रॉम माई कम्युनिटी उनका लव नीचे. आई टेंड टू नॉट अग्री विद दैट. लव इज अबाउट maybe knowing each other. अच्छा, आप अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली में बनना क्या चाहते हैं? मतलब एक लाइफ में गोल सेट होता है तो वो क्या है आपका? मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई आइडियल बनूँ और इसके साथ ही ताकि लोग मुझे पहचान सके और उनको लगे कि हाँ ये कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं. क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहीं ना कहीं अभी भी सोशली बहुत बैकवर्ड है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है और अभी भी वो समाज में एक अलग कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है. चाहे कितने भी लॉ चेंज हो जाए पर अभी भी कई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अभी भी या तो वो बैकिंग करते हैं, टोली बधाई करते हैं या वो लोग प्रोस्टिट्यूशन करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कोई आइडियल बनूँ ताकि उनको भी लगे कि हम लोग सोसाइटी से अलग नहीं है और हम भी एक मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं. तो आपको मतलब सेक्शन 377 जब लागू हुआ उसके बाद में क्या कुछ चेंजेस आए आपके लिए? मतलब आपको कुछ फील हुआ हो कि हाँ ये अच्छा हुआ है हमारे लिए, कुछ ऐसा? सेक्शन 377 आने के बाद एक तो हमें प्राउड फील हुआ कि आज हम लोग अपनी डिग्निटी के साथ रह सकते हैं LGBT कम्युनिटी और अपना सेक्शुअल ओरिएंटेशन हम खुलकर बता सकते हैं. और हम पे ये एटलीस्ट जो एक था कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन बनाते थे, प्यार करते थे तो हमें लगता था कि जो लॉ है वो हम लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं. बट आज हम एक प्राउड के साथ कह सकते हैं कि मेरी सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है.
ठीक है, मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, ट्रांस, और एक डर नहीं रहता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन बनाती हूँ तो कहीं मतलब एक लॉ के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग जो पहले कहते थे कि अननेचुरल फीलिंग है, तो हमें बहुत हर्ट होती थी कि क्यों अननेचुरल है, जबकि मैं इसे पूरी तरह नेचुरल मानती हूँ। बट आज मैं एक लॉ, पूरे प्रॉपर लॉ के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये बिल्कुल नेचुरल है और किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो मैं आज अपना ओरिएंटेशन को एक प्राउड के साथ एक्सप्रेस कर सकती हूँ। I've tried opening up, like showing them like movies, small snippets of people who are trans or who are gay, like Karan Johar, for example, the most wide known person. And the instant question is, oh, he's not married, then how does he have kids? Okay, he has kids, so that is a solace. As long as he has kids, it's a solace. Then how does he partner and all that? That's there. And the moment there is, like for example, when the 377 judgment came out, it was a moment when I wanted to tell my parents that same evening. TV mein it was flashing, the next day it came in the newspaper, and I could see my parents not being comfortable with even engaging with it. They just changed the channels. How do you think and see, a lot of my friends have gone through rehab where they get raped, where they are raped by even family members, where they are put through shocks. Trans persons, I'm not even talking about the other persons in the community. So, and at the very least, you might be just thrown out. If you're thrown out, what are you gonna do? Well, how are you gonna survive? How are you gonna are you gonna beg on the streets? Because how much time will you depend on your friends, right? You have to fulfill your needs, you'll have to खाना के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, ultimately. All this comes, so a lot of people do tend to advise me कि जब तक job नहीं है तब तक कुछ मत करो, कुछ मत बोलो. I don't know. Let's see. जब आप रहते हो ना, क्वेयर रहते हो, और जब आप एक सेट नॉर्म के बीच में रहते हो कि यही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो अपने अंदर तो लड़ाई चल ही रही होती है, बाहर भी लड़ाई करनी पड़ती है. बाहर की लड़ाई सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है. मैं बहुत बार थेरेपी में गई, मुझे लोगों ने डेंजरस करार दे दिया, मुझे बोला ये तो ऐसे, ये तो वो लोग हैं ना जो गलत काम करते हैं. मतलब एक से प्यार नहीं हुआ मुझे ना, तो वो गलत काम हो गया. और मैं सही बताऊं, मुझे मर्दों ने सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया इस वजह से, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं उनका मैस्कुलिनिटी चैलेंज हो रहा है. हाँ, क्योंकि एक तो मेरी बॉडी ऐसी थी और उन्होंने बोला कि तुझे कौन छुएगा, तुझे कौन टच करेगा, एक बड़े पोल से भी ऐसे करके मुझे वर्ड यूज़ किए गए. तो मुझे तो पहले ये नहीं लगा, मुझे किसी ने बताया नहीं. लेकिन जब दिल्ली आई, मैं दिल्ली आने के बाद मैंने जब पढ़ना शुरू किया, दिल्ली आने से पहले भी बहुत सारे LGBTQ टेक्स्ट, क्वेयर टेक्स्ट पढ़े मैंने. ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन एक अंदर में ना एक संतुष्टि आई कि चलो अब मैं अपने आप को असर्ट कर सकती हूँ. मैं बुक लिखूँगी, मैं अपना बहुजन पैनसेक्सुअल जो है एक्सपीरियंस जो है, मैं अभी एक काम कर रही हूँ मेरे फैट बॉडी के ऑटो एथनोग्राफी पे. तो उसमें मेरा बहुजन आइडेंटिटी, मेरा पैनसेक्सुअल आइडेंटिटी भी आएगा, साथ में मेरा फैटनेस भी है. तो ये ऑटो एथनोग्राफी है मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक. मैं जब मतलब क्या हुआ था, और मेरा फैट परफॉर्मेंस है. मतलब परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि थिएटर में जाके परफॉर्मेंस, डेली ये भी मैं जैसे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लोग मेरे परफॉर्मेंस से कैसे ये हैं, तो वो शायद से अभी आएंगे. तो मैं उस पर काम कर रही हूँ. मेरी खुद की बॉडी एक फील्ड वर्क आप बाहर में जाके करते हो, मैं खुद में कर रही हूँ.